So our class today we will be discuss on HTML and CSS. I mean this part from the HTML, right? Only we will be discuss the HTML because today onwards our class will be going on the web development as only for purpose, right? So now in the previous classes means two class in previous one, so we only discuss about the syllabus of HTML, I mean front end, right? So here we will discuss the HTML and CSS and then demo implementation, JavaScript, Ajax and JSON and problem solving then React. This is our the module for the front end part, right? This is our module for the front end part. So today onwards we will be discuss on from the HTML, right? In the HTML have a why in HTML why we should use to HTML for developing purpose means creating the website. What is the use of HTML and where can we use, what is the tag in that, all the thing we will be covered today onwards. Means this class will be take 7 days as per discussed already we as in the previous class means introduction class, right? Then after we will be moved to CSS part, right? And this two thing is relatable to each other and also our JavaScript and Ajax JSONs, the every front end part are the relatable to each other, right? And for this web development means web page creation, you required a one thing is what VS Code we use for as a compiler area, or we can say editor means code editor, right? Is enough, right? So without delay we are going to discuss the HTML. What is the HTML? This is your full printable notes, which one I will be provide in the group, right? And this is the enough for your HTML part, right? This notes is enough for your HTML part. So without delay we are going to discuss. So in the introduction part, what is the meaning of HTML, or what is the full form of HTML? So HTML stands for hypertext markup language. What is the use of HTML, right? So this one is only used for the creating the web application means content writing to use to create, right? And HTML was created by Berners-Lee, right, in 1991. In a starting time we have a only HTML, we don't have any style, but then after the HTML will be updated and updated. Still now the we have a HTML5. Now we are currently using the HTML5. This is the version. Here data is not updated,
but you can write here, wait, you can write here the HTML 5. So now current version. So this is about the basic information. What is the HTML for that, right? So originally, why we learn the HTML? If anyone asks to why we should learn to HTML. So this HTML used for the creating your website, right? And for designing purpose means just like I create HTML, how it will be created. Now I am showing you. Wait, this is your code. So I erase this all the things. I'm writing from here, right? I will write this one. So don't worry. What is the doc type? What is the lang? And what is the meta, character, and name, content? Don't think about this. Only see the content, right? How look like a HTML, right? So HTML is look like that. This is the structure of HTML, right? So I want a simply any paragraph, and here I am giving in lorem like that, right? And I want to save this and show you how it look like the web application with the help of our code. So this is the our format. This is our format to show. If you want to see, if you want to see the first web application means website, first website image. So I am showing you. So this will look like that. This is the first application in the history. Go to here. Sorry, this is the content part. It's look like that. It have a only World Wide Web. It have a only link, only content. Other than this, nothing it have. So this is the first web application, right? And before of this means before of this era, right? When in the 1991, when we was going to create a web application, so we can only use HTML part, not any designing, right? So now is the many modification or many designing we have. Now we are working as a modern web developer, right? It have a transition, right? In the starting time we have a only text and link. With the help of link we can be connect our web pages. And one thing is more important in the starting time, when this type of technology is created by the developer, so there are a link just like that. It's not like that URL. Means if you are want to visit any Wikipedia, any Wikipedia in the sense anyone, just like any document or code editor or any things which have to help you to creating any website, just like our this, right? So this is our link, but in the starting time,
in the starting time, how can we remember that long link? Means if we want to search any book, so how can we search in the previous, means in the starting time? So we write first https, right? Then after slash, then after slash and www, then after anything which one I want to go and search, means just like any government website, right? So go with in, like that. But this is the Indian government portal. This is the Indian portal. So now we are easily access this. But in the previous one, I want to go for a student login form. So how can we go? So in the previous means in the starting time, we need to write first this thing, then after login page, like that. Dot that name just like soap, right? Then login, like that. This is the first method where we go there. But now in the modern web application, we can go anywhere to anywhere with the hyperlinking, means with the help of link. Means I want to go in the first government link, and I also want to where I want to go in my government or service page. We can go from here to there. But in the previous one, it's not possible. If you are going to search anything, means you write the full URL. So in the starting times, the developer seemed like this problem. Ki how can we remember this lot of the URL we have? So how can we remember the any person? So there are created one app when one tag that is called as a link. With the help of link, we can linking to each other web application. Got it? Right? So this is called as our web application. So HTML is what? So HTML is a why we need HTML, why we learn the HTML for the web application. If I want to become a software front-end developer in the web application, then we need to learn the HTML first, because it will help to create your web application. Means if I am giving you example, so understand human skeleton, human skeleton. This is called as a what? HTML, right? This is called as a what? HTML. Or even if you are going to buy a car, right? So car you have, means you have a car, means what? They are not only the bricks, I mean not only the iron, not only the aluminum, not only the plastic. It's a painted plastic just like that. So if you are giving the example for HTML, so we can say human skeleton, right? This is our HTML, right? Or if I am giving you example for CSS, right? For CSS, so we can say human as original format, not this or any, just like that. So this is the CSS. With the help of CSS, we can be design this.
And if we are talking about what JavaScript, okay, what is the work of JavaScript? So we can say the human features, or we can human activity is called as a JavaScript, right? Just like if you want to work, then you can think you work. So this is called as a JavaScript. So JavaScript is what? It will be give you the functionality, and HTML is what? It is a skeleton of human. Understand? तो इन द सेंस मीन्स व्हाट, कि जो HTML क्या कर रहा है, HTML वो क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक स्केलेटन को तैयार कर रहा है। और CSS क्या कर रही है, उस पे वो फंक्शन, वो स्टाइलिश ला रहा है, वो कलर उसका डिफाइन कर रहा है, उसकी हाइट को डिफाइन कर रहा है, लाइक दैट। और जो ह्यूमन फंक्शन करता है, काम करता है, वो किसके हेल्प से हो रहा है? जस्ट लाइक समझो जावा स्क्रिप्ट है, वो काम कराता है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर द HTML, CSS and JavaScript. मीन्स इफ आई वांट टू क्रिएट दिस, है ना, ये वाला अगर पोर्शन मैं चाहूँ क्रिएट करना, तो कैसे क्रिएट करूंगा? तो वो HTML के हेल्प से हो जाएंगे अपन के। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ तो सिर्फ अगर HTML की बात करेंगे, जस्ट लाइक इसकी बात मानते हैं, तो देखो अगर हम CSS कर रहे हैं तो ये सिर्फ वाइट वाइट रहेगा, सॉरी HTML कर रहे हैं तो, है ना। और मैं चाहता हूँ क्या, कि यहाँ पे एक ये चीज हो जाए कि वो कलर दिखे, देखो, है ना। तो ये CSS के हेल्प से यहाँ पर कलर आएंगे डिजाइनिंग में। अब मैं चाहता हूँ क्या, कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये सेलेक्ट हो जाए और ये लिखने लगे उसी कलर का, मीन्स ये ड्राइंग उसी कलर का दे जिस कलर का मैंने वहां पर बना कर रखा है, जो कलर मैंने उसमें सेलेक्ट किया है। तो ये किसके हेल्प से आएगा? जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, राइट। सो HTML इज व्हाट? इट वाज a creating your web application. After learning of this, right, I mean HTML, CSS, you can become a web designer if you know well the HTML plus CSS. So you are a web designer, right? And if you know well to JavaScript, so you become a web developer, because you know well to logic, you know well to logic. Understood what I am saying you, and what is my point? Okay, so so what is the application of HTML? So application means what? ये HTML जो होता है, वो सिंपल से सिंपल क्या है, वेब डेवलपमेंट के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए दिया जाता है, इंटरनेट नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इवन ये HTML जो है वो अभी अभी फिलहाल में गेम डेवलपिंग वगैरह में भी यूज हो रहे हैं, जो HTML5 से हो रहे हैं, ठीक है। इट्स नथिंग टू मोर हियर, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक थिंग्स, कि व्हाट इज दैट डॉग टाइप। मीन्स here we was seen ना, कि here is a one thing is what? HTML doc, I mean doc type HTML. So what is that? So this code I'll be here, look at. So doc type is what? Doc type is what? So doc type is defined to the HTML version, right? ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको दिखा रहा है कि आप किस वर्जन को यूज कर रहे हो,
Let you show the HTML5 code. Sorry, 4. HTML4, right? So show you where I will go to image and see. This is your HTML4 tab. How can we write? Right? I want to copy this image, save as, and wait, I'm open here that image. Download section, this image, insert. Where are that image? Where is that? सबसे नीचे गया क्या ये? Okay, let it be not here, from here. I can insert here. So see, this is your HTML4. HTML4. How it's look like? Mean in HTML5 you can write like that code. See, like that code. First you write doc tag, right? This is your format. First you write doc tag dot HTML. But in HTML4 you need to write of this line of code. Means look how it is hard. See, this is your HTML4. Mean first you write the doc tab, then HTML, then public, and this is called as a, if you are coming from the computer science background, then you will be you learned about this in your previous semester, right? So public is the called as a access modifier. Access, this is a access modifier. Correct. And this is head part is the similar. Before of this means only modification is here, and something code are be deleted from this, right? So this is the difference between HTML4 HTML5. So HTML5 is more comfortable than to HTML4. Okay. So HTML doctab is, what is the work of doctab? So doctab is showing the version of HTML. Remember this thing. What it will be do? It will be do the version of HTML. And what is the work of HTML? It is defining, this is the page of HTML. What it will be do? Is defining from here, from here to consider this is the web page or web content are be in between HTML tag. Means from the HTML
starting and then ending with the HTML, mean closing with HTML. In between everything at the consider as a application. As it is, it will be print there, mean in the web page. And what is the work of head? So every document or every page, right? It have a some heading. Means consider this is your web application. So upper part is called as a what? Head. And lower part what is called as a? It is called as a footer. And remaining in called as a body. Like that concept is also it have. So every link data are be in the head part. समझ में आया? ओके. एंड इस बॉडी के अंदर में मीन्स इन बिटवीन बॉडी हमारा सारा का सारा कंटेंट बॉडी के अंदर में रहेगा. कुछ भी चाहते हैं हम, इमेज लगाना चाहते हैं, लिंक लगाना चाहते हैं, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन बी एड हियर. गॉट इट? एंड बी से आप करना शुरू कर दोगे. ठीक है. अभी जब हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस पे डेमोन्स्ट्रेट करने, बस थ्योरी पोर्शन अब खत्म हो करके अब डायरेक्ट हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे ही जाएंगे. बस इतना ही था थ्योरी आपके पास. अब एवरी टैग एवरी लाइन हम लोग वही कोड कंपाइलर पे ही सीखेंगे. बोर्ड की हम लोग को जो ज़्यादा पड़ेगी. समझ में आया यहाँ तक का? ओके. तो अब हम लोग चलते हैं कंपाइलर पे. तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टोटल के टोटल कोड है. ये लैंग जो है इस जगह पर, ये जो हमारा लैंग है, ये लैंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज. समझ में आया? यहाँ पे जो लैंग है वो इसका मतलब क्या होगा? लैंग्वेज. और इस जगह पे हमारा टाइटल, हेड के अंदर में टाइटल रहता है. ये टाइटल कहाँ से होता है? जस्ट लाइक मैं आज आपका कौन से क्लास है? डे 3 है ना? सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे 3. प्लेस कीजिए एंड हम लोग लैब सर्वर पे जाते हैं. तो अब बताओ मेरे को, आपको डे 3 कहाँ मिला? वेट अ फ्यू सेकेंड, वो मीटिंग का ये हो गया.
इनविजुअल है, चलिए विजुअल है ना इसकी। ये हमारा क्या होगा, वेब एप्लीकेशन। और हम टाइटल में जो भी लिखते हैं वो हमारा यहाँ आता है। Got it point? Where it will be show? It will be showing here. It will be showing here. This part. This part belongs to title part. And if we are dividing this application, means web, this is the part and this is the footer part. Correct? This is the footer part. Yes or no? Means this one called as a head and this is called as a footer, and this remaining part means in middle one is called as a body. Correct? In head part we only define the link, title, metadata, आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा कि if I want to describe the any link or any data, right, means metadata, in the HTML where I can write the tag. So our answer is what? In head part. Yes Sachin, why you raise hand? ये आपका होता है, मेटा डेटा की बात करोगे सो मीन्स ये वेब अपना है, वेब है ना। इस वेब को किस टाइप का बना रहे हो, एजुकेशन बना रहे हो, एजुकेशनल डेटा है आपका, या फिर आप शॉपिंग वाला कुछ बना रहे हो। सो हेयर दिस इज डेटा फ्रॉम द गूगल सर्वर, right, and it have a some keywords. Based on that it will be show to user. मीन्स ये समझो कि मेटा डेटा जो होता है उसके पास कीवर्ड वगैरह पहले से डेटा तैयार है, ठीक है। और आप देखे भी होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे आप यूज किए होंगे तो देखे होंगे कि मेटा डेटा है कुछ करके आ रहा है। तो वो डेटा क्या होता है कि वहां पर ऑलरेडी पहले से एक फाउंडेशन तैयार करके रखा गया है, जस्ट लाइक ये एक बॉक्स है, ठीक है। इसके पास सभी तरीके का डेटा भरपूर है, मीन्स एजुकेशनल हो गया, आपका वेब एप्लीकेशन है तो शॉपिंग हो गया। अगर कोई यूजर यहाँ आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे आ रहा है क्या सर्च करने के लिए, बुक सर्च करने के लिए, है ना, ए यूजर, तो ये डेटा यहाँ फेच करेगा, सर्वर पे आएगा और इस डेटा में से वो सर्वर है ना तलाशेगा कि अच्छा एजुकेशन का कौन कौन सा हमारे पास वेब एप्लीकेशन है, तो वो वेब एप्लीकेशन इसके रिस्पॉन्स में उसको बैक करके देगा, वही मेटा डेटा। in the in the later I will be discuss there how can we define the metadata. अभी आपको कुछ मेटा डेटा यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे देखो इरेज करते हैं इसको और हम आपको यहाँ दिखाते हैं। देखो यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है। here also one tag there are mentioned the educational means JavaScript, just like that JavaScript, HTML, CSS। यहाँ पे अगर हम ये कीवर्ड अगर यूज कर दिए मेटा डेटा के अंदर, ठीक है, मीन्स कंटेंट के अंदर, तो ये सारे ये वेब एप्लीकेशन किस किस को शो होगा,
जो ये कीवर्ड करके सर्च करता है सर्च इंजन पर। समझ में आया कि अगर सर्च इन क्रोम पर अगर सर्च किया या गूगल पे सर्च किया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये अपना जो वेब अभी अपन लोगों ने क्रिएट किया ये वेब पेज, वो ले जाकर के वहां शो करेगा। समझ में आ गया? ठीक, करेक्ट। ओके, उसके बाद अब अपन लोग आते हैं इस पॉइंट पर। टाइटल भी समझ में आ गया, टाइटल का क्या यूज है। अगर अपन चाहते हैं जस्ट लाइक ये देखो आप, यहाँ पर आ रहा है टैब, ये देखो लिखा हुआ, यहाँ पे देखो मीट डॉट वी यू पी एच वाई डी एक्स वाई लिखा हुआ है, करेक्ट, ये आईडी है। सो ये किसके हेल्प से आएगा, बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग द वेब एप्लीकेशन, करेक्ट ना। तो ये वेब एप्लीकेशन है, ये जब तक हमारे टाइटल में डिफाइन नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। और इफ यू वांट टू एनी वेब एप्लीकेशन ना, सो वी आर गोइंग टू हियर, ओके। आप इस पे जाओ, देखो यहाँ पे नेशनल पोर्टल इंडिया लिखा हुआ है। सो वेन एवर आवर रिक्वायरमेंट इज वर्ड कि आई विल गो एनी पेजेज, मतलब मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा, वहां पर अपना पेज है ना इस टाइटल में, इस डास क्या बोलते हैं इस बार में, ठीक है। इस बार में अपन का क्या नजर आना चाहिए, टास्क बार में अपन का यहाँ पर नजर आना चाहिए, इस टैब में आपका नजर आना चाहिए वो वेब एप्लीकेशन का पेज, ठीक है। सपोज हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो एप्लीकेशन क्या करता है, तो वो एप्लीकेशन है ना, मैं लिख देता हूँ टाइटल, ठीक है। और ये एप्लीकेशन है ना हमारा है ना जावा स्क्रिप्ट के रिलेटेड है, या फिर कोई भी बुक बैंक के रिलेटेड है, बुक बैंक, ठीक है। और ये बुक बैंक में क्या है, अपन जस्ट लाइक लिख देते हैं कोड अकेडमी, ये अपन का बुक बैंक। when you are be saving this and automatically refresh it, so here your book bank code academy। so आपको समझ में आ गया टाइटल का क्या काम है, टाइटल टैग का। चलिए, एंड सबसे फर्स्ट टैग हम लोग इन सबसे ज़्यादा जो यूज करेंगे उस टैग पर अब आते हैं। अब वन बाय वन अब हम लोग क्या करेंगे, टैग पढ़ेंगे। HTML बेसिक टैग, पहला पॉइंट, पहला होता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग होता है जहां पे आप हेड दिखाते हो उसको, मीन्स ये देखो ये HTML लिखे हम, है ना, तो ये हेड हुआ, है ना। सो अगर हम जब भी हेडिंग लगाएंगे, सो वी कैन यूज द एच वो टैग, मीन्स कॉल्ड एज ए हेडिंग टैग। हेडिंग का ही शॉर्ट आई मीन स्टार्टिंग अल्फाबेट H1 लिख देते हैं, H लिख देते हैं हम लोग। और प्रोग्रामर आई मीन डेवलपर ने इसको 6 तरीके का हेडिंग बना करके अपन को दिए हैं लेवल बाई लेवल, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, राइट। इट हैव ए डिफरेंट साइज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि प्रॉपर्टीज अपन अपन लोग की जनरल लाइफ में जब अपन लोग हेडिंग लिखते हैं तो क्या उसको बोल्ट करके लिखते हैं ना, तो ये बोल्ट करके रहेगा। ये बोल्टनेस डिपेंड करेगी इस पे कि आप किस टाइप का ले रहे हो। सबसे ज्यादा आई मीन हाईएस्ट बोल्ट जो होगा आपका H1 होगा। H2 से अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो डिकेजिंग फॉर्मेट में, करेक्ट, इफ यू आर गोइंग टू डिकेजिंग फॉर्मेट, then the boldness of the heading tag also decrease, मीन्स ये जो आपका H1 होगा वो हाईएस्ट बोल्टनेस रखेगा, बोल्ड रहेगा। देन H2 लोअर देन H3, H4, H5, H6,
समझ में आ गया? So now I am giving an example. So I want to heading as a h1, and remember one thing, HTML, our HTML means what, हमारा जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है. आप h1 भी लिखोगे then it is also correct, और अगर आप स्मॉल h1 लिखते हो this is also correct. समझ में आ गया? So but better practice is what, you write a small thing, right? I want to write here code get me, and I want to copy this 3 times 4 times, how much it was, 1 2 3 4 5, and I want control alt 1 2 3 4, this one I want to change as a 2, or in the below one 3 4 5, right? There are two one remove it, all the things from here, and also, and this one is called as a stro 6, और ये अपन लोग देखेंगे, ठीक है? कंट्रोल एस and go and watch. So look at here, सबसे ज्यादा किसके पास बोल्डनेस है? h1 के बाद. अब हम जब जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बोल्डनेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जाएगा, है ना? So when you are going to write a HTML means web application, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको जब आपके पास रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस पे काम करो. इन बिटवीन जो भी आपको जरूरत है वो सारे के सारे को आप यूज कर सकते हो, करेक्ट? एंड देन आफ्टर one tag is what is paragraph tag. So paragraph tag is only used for the writing of paragraph, correct? पैराग्राफ लिखने के लिए हमारा यूज होता है. व्हाट इज माय पॉइंट? सो आज हम लोगों ने कितने टैग को पढ़ा? डॉग टैग, HTML, हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, मेटा टैग, and heading tag and paragraph tag. So if I are going to summarize, so how much we tag we know? So we know for today class, wait, why is disconnected? So we have a how much tag? Come here, and we have a 3 tag. Oh, Hindi. Wait. First one is dog tag, right? Second one is what? HTML tag. Third one is what? Heading tag. Fourth one is what? Body tag.
Fifth one is what? Title. Sixth one is what? Paragraph tag. This all. And also one thing is heading also means seventh one is heading means h1, h2, h3, h4, h5 and h6. This is your tag. Correct? This is your basic tag. And then after we have what? We have a center tag, break tag. Another tag is what? Break tag. Means I have a BR tag. You can write BR tag. If we are writing the BR tag, then definitely our code will be break from here. Look at. देखो यहाँ से आपका क्या हो गया, कोड को ब्रेक लग गया. सो ब्रेक टैग क्या करता है? ब्रेक का टैग हेल्प करता है आपको कंटेंट को ब्रेक करने के लिए, बीच से ब्रेक करने के लिए. इफ यू वांट टू ब्रेकिंग दैट एनी कंटेंट फ्रॉम बिटवीन or divide two part, then you can be write here break tag. So you have a one more tag is also what? BR tag. It one is what? BR tag. Correct? And then after आपके पास क्या आते हैं? टैग आता है center tag. If you want to this code means this paragraph, leave it. I want to this heading in the center, right? So simply you can write here center, right? Sorry, Control Z. You write center, enter, paste it, and look, this content become in the center. But in the HTML5 this tag was deleted. समझ में आया? इस टैग को हटा दिया गया. क्यों हटाया गया? क्योंकि इसको जो सेंटर में लाने के लिए हम लोग CSS का यूज करते हैं. ठीक है? So this is all about your today class. ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा और एक और टैग पर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन. अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे है ना हेडिंग और इसमें है ना लाइन दे दूँ. So how can we do? So we have a tag called as a HR tag called as a horizontal line. सेव करो एंड लुक, यहाँ पे आपका एक लाइन आ गया. करेक्ट? ये आपके बेसिक टैग रहे. और आज के असाइनमेंट की बात करेंगे. सो टुडे you will be develop what? For APC किस पे आपको दें बनाने के लिए?
APJ अब्दुल कलाम इमेज बुक कंटेंट। No, not this one. Don't create this one. This one is correct. तो आपको क्या करना है, ये इसको कोड करना है, आपको इमेज नहीं लगाना है, ओनली राइट दिस वन इन हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आपको ये कंटेंट आपको लिखना है, ठीक है। सिंपल से आपको यही करना, कलर वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपल से आप एक वेब एप्लीकेशन बनाना है जिसपे ये रहेगा, ठीक है। और उसके कंटेंट के ऊपर यहाँ पर जो आपका टैग ये है ना, ये क्या बोलते हैं, टैब जो है, इस टैब पे एपीजे अब्दुल कलाम लिखा है, ठीक है। कैसे करोगे, आज हो जाएगा। बस, हाँ, क्लास का जस्ट हम आपको भेज रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको यही कर करके आपको आज के असाइनमेंट में आपका यही रहेगा। स्लोली स्लोली हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए आपका जो असाइनमेंट था, अभी मैं आपका ये ख़त्म होगा, देन आफ्टर मैं आपको शेयर कर दूंगा वो डॉक्यूमेंट भी HTML का, और आपका ये लेक्चर भी अपलोड होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, करेक्ट। एंड देन आफ्टर